अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? अच्छा, जो प्रीवियस वीडियो मैंने बनाई थी ट्रायल बैलेंस की ना, तो उसमें ड्यू टू सम ग्लिच साउंड इज नॉट अवेलेबल ना। तो होपफुली विद इन कपल ऑफ डेज उसको मैं सही कर लूँगा। बट फॉर द असिस्टेंट्स एंड आई नो देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग इन देयर मिड टर्म एग्जामिनेशन और दे आर वीक इन द ट्रायल बैलेंस ना। So for them, I am making this trial balance for their assistance, and I feel कि inshallah after making this trial balance, they will find it easier to cope up with the issue. Similarly, उस वीडियो में मैंने effectiveness and uses and benefits and limitations of trial balance भी बताया हुआ है. So it is for the information and not only for the beginner but for everyone. It is very important for 10th class student as well and 11th class student as well. Na? So we are starting this question. I have told you earlier that we have to follow rule of accounting, which is basically asset, liability, capital, expense, revenue. ना तो अगर हमारे rules of accounting clear है, then uh, we will easily make trial balance. ना so for example, asset, liability, capital, expense, and the last one, revenue. Asset increase on the debit side, expense increase on the debit side, while liability, capital and revenue increase on the credit side. So from this list, ये जो list है हमारे पास पूरी, इसमें से हमें ये identify करना है कि asset कौन से हैं, that should be recorded on the debit side, expenses record होंगे debit side पे, and the rest will be recorded on the credit side. Okay, we are starting the question. Non-current asset, as the name suggests, it is an asset तो 9500 डेबिट साइड पे आ गया. ट्रेड पेबल इज अ लाइबिलिटी. 8500 इधर आ गई वैल्यू. ट्रेड रिसीवेबल 7250 ये हमारा एसेट है, करंट एसेट है ट्रेड रिसीवेबल. ये हमारा डेबिट साइड पे आ गया. इन्वेंट्री 3850 इट इज ऑल्सो एन एसेट, डेबिट साइड पे आ गया. बैंक ओवरड्राफ्ट, remember this thing कि bank overdraft is a current liability and bank overdraft is the why it is a liability because bank overdraft means कि we are we this is a current liability. ठीक है. और current liability इसलिए है क्योंकि 1600 ये वैल्यू है because it means कि we have withdrawn more cash which is available. यानी हमें बैंक ने फैसिलिटी दे दी कि अगर हमारे पास कैश अवेलेबल नहीं है तो हमारा चेक बाउंस ना हो तो बैंक ने अपनी तरफ से पे कर दिया तो ये फैसिलिटी मिल जाती है हमें. बट इट इज अ करंट लाइबिलिटी वी हैव टू पे बैक टू द बैंक. Similarly, 14,400 is our purchases. After this purchases, there is a revenue of 22,000 revenue increase on the credit side. Then bank loan, as its name suggests, it is a current liability or it can be a non-current liability. Then after that, there is a capital. We will put capital on the credit side because capital increase on the credit side. This is the simple T account or after making this T account, what we have to do, we have to follow the rule of T account, which is debit equals to credit. Now we will find the total 8500 plus 1600 plus 22,000 plus 2000 plus 3000. इसका क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 37,100 और इसके डेबिट साइड का बैलेंस भी यही होना चाहिए 9500 7250 3850 और 14400. ठीक है. और अच्छा जी, बैलेंसिंग द ट्रायल बैलेंस बाय द यूज ऑफ एन एप्रोप्रिएट अकाउंट. बेसिकली दिस ट्रायल बैलेंस इज नॉट इक्वल और इन्होंने कहा है 2100 का एक बैलेंस बच रहा है. तो लेट अस सी कि वो क्या हो सकता है. दिस इज बेसिकली द सीआई's क्वेश्चन. तो अच्छा जी, बैलेंस इसका क्या आ रहा था. Let us check it again. 8500 plus 1600 plus 22,000 plus 5000 37,100. इधर भी 37,100 होना चाहिए. ठीक है.
For नाइन्थ क्लास स्टूडेंट दे विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू नो कि ये जो है एरर क्यों आ रहा है। ऊपर क्वेश्चन में इन्होंने कहा है, ऑन 31st August 2014 Adil had the following balances in his books. He was aware that there were some bookkeeping errors and that the trial balance would not balance. तो बेसिकली ये ट्रायल बैलेंस में प्रॉब्लम है, ये बैलेंस नहीं का। तो वी विल अज्यूम फॉर द नाइन्थ क्लास स्टूडेंट के, लेट अस अज्यूम कि ये कैश बैलेंस, ठीक है, इट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन और ये हमारा कैश बैलेंस है। फॉर क्लास 10th students who have studied the errors and for the 11th student who have studied the error, they know that the difference is due to the suspense account. But for ninth class, I have assumed that it is a cash balance. I hope this is clear now. When we are making trial balance, we just have to follow the rule of accounting, that is increase asset कब increase होता है, कब decrease होता है, liability कब increase होती है, decrease होती है, capital increase decrease कब होता है, expense and revenue. If you are able to identify which thing is what, तो इंशाल्लाह ये क्वेश्चन आपको इंशाल्लाह बिल्कुल भी प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा और यू विल इजीली सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, फॉर नाउ ऑन आई थिंक इट इज इनफ फॉर द स्टूडेंट्स कि वो ट्रायल बैलेंस समझ गए होंगे। और फिर हम जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर बहुत जल्द मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज।